Offset. No one ever see me 'cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Good evening. This is Menuka Nag Mahato from Data Yug Society. Data Yug Society is an organization, it's a non-government organization based in Meghalaya, Shillong. We are basically running an NGO against cybercrime and cybercrime awareness, digital literacy, which is a much required thing in today's world. As we know, the world is going digitally, every day it's digitally developing. Along with that, digital awareness is required. For digital awareness and digital literacy, for combining thing, we have opened Data Yug Society, where we are awareing people about the cybercrime and also making people educated about what's going on in digital world. Today we are here to conduct one workshop. It's a campaign of Cyber Santa awareness. Cyber Santa awareness because today it's a festive season and Christmas is going on. People are here for shopping, and the basic topic which we are looking today is online shopping scam. Ek lo to do free. Give me your credit card details. You'll get this offer, that offer. So we want to make people aware about this thing, what's going on in digital scape against this online shopping scam. हम इसी के अवेयरनेस देने के लिए आज यहाँ पे विद आवर टीम इज ऑलरेडी बिजी इन कंडक्टिंग द इंटरव्यूज एंड ऑल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी वन टू कम एंड स्टैंड विद अस बिकॉज द साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड what we are thinking today. It is increasing rapidly and we are not able to stop it. And I also want to tell you that we are collaborated with Meghalaya Cyber Wing, and our SP sir will also be joining in this campaign. Very soon he will be here with us. So if SP sir and we and you people together will come to fight against the cybercrime, I think we can fight this and we can make our digital world safe and secure. Wishing you all Merry Christmas and a cyber safe world. Thank you. Good evening, I am Pankaj Kanya, SP Cyber Meghalaya, Shillong. Today I am here in Police Bazar, Shillong, and as we all know, cyber crimes are increasing, and this year 2024 has seen one of the highest crime rates in cyber crime. In order to prevent these cyber crimes, we all have to be aware, and Data Yug is doing a campaign here where Cyber Center is here and they are asking questions to citizens and distributing chocolates. So we really need this kind of initiatives, and it's very good, and I congratulate Data Yug for this initiative. For cyber awareness, we have to be really on our toes because it has been increasing at an unprecedented rate. Moreover, the cyber criminals are ever evolving and we are using new tactics. So we have to be really up to date. For that, you should always follow our channel on Instagram, Facebook, and also follow cyber source which are disseminating the new cyber crimes which are happening. So that will help you to keep up to date with what kind of scams are there. And never ever share your OTP, never make payments through UPI to unknown people, and never invest on any applications which you don't trust. And if you have any doubt, you come to the police station, you come to Cyber Wing, we will help you out, whether it is a genuine or it is a fake. But always beware, stay safe. This Christmas, Happy New Year and Happy Merry Christmas. So yes, stay safe. Hello everyone, my name is Shreyas Murray. I am the Cyber Forensic Consultant with CID Cybercrime Wing, Meghalaya. Okay. Sir, today what program is going on here? Today CID Cybercrime Wing the Cyber Wing is collaborated with Data Yug to spread awareness amongst the growing cybercrime and how you can protect yourself, what steps you can take, better awareness, and how to increase your cyber safety, especially with the cybercrimes going on. जो क्राइम्स आजकल बढ़ रहे हैं वो साइबर क्राइम्स है। पहले चोर आपके सामने से आके या आपके घर में आके आपसे चोरी करते थे। आजकल जो डिजिटल चोर है वही दूर बैठे बैठे आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं और आपको झांसे में लाते हैं। सो इसमें वी हैव टू बी वेरी अवेयर। although digital India है, but due to that the mode of payments is also digital and the danger is also increased. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अवेयरनेस प्ले करता है। हम जितना ज़्यादा सचेत रहेंगे, जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, उतने ज़्यादा हमारे चांसेस है कि हम ऐसे साइबर क्राइम को रोक सकें, ऐसे क्रिमिनल्स को बढ़ने ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये हम
मैसेज हमारे दोस्तों परिवारजनों के बीच में फैला है कि हमको सिक्योर होना ज़रूरी है, खास करके डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में। सर मेघालय से ऐसे कितने केसेस जो आए हैं जो मतलब अनजान लोग इस झांसे में फंस चुके हैं? हमारे यहाँ का सर सबसे ज़्यादा जो दुखी पार्ट ये है कि मेघालय में साइबर क्राइम उतना मतलब क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन साइबर विक्टिम्स है। तो बाकी जगह से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बेचारे सिटीजन्स को यहाँ पर फंसा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जो अटैकर्स है, ये जो साइबर क्रिमिनल्स है, ये लोगों को जो लालच देते हैं पैसों का या वासना का, तो इसमें लोग फंसते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं बेचारे मजबूरी में। तो ह्यूमन इमोशंस को ये लोग फ़ायदा उठा के इनको ये मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग को पता भी नहीं रहता, कभी कभी वो साइबर क्राइम में फंस चुके हैं लेन में जी सर। और इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा समय अपने दिनचर्या से निकाल के इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है। अगर आप एक मोबाइल चला रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उसके अच्छी चीज़ें क्या और ख़राब चीज़ें क्या हैं।